Hey guys, so we recently went to Japan and it was an awesome experience. So in this video, I'll be telling you everything about a Japan visa. I'll tell you all the normal details which you'll also get on the website, and I'll also be telling you about the important tips which you need to keep in mind, or the important cautions which you need to take while applying for a Japan visa. This video, I'll be talking about the types of visa you can apply for Japan, how you can apply a visa for Japan. I'll show it on the laptop screen, and also I'll give you some important cautions and tips while applying for a Japan visa. So please watch the video till the end and don't skip in between. So previously for Japan, only one type of visa was available, and that was the sticker visa, in which the visa comes pasted on your passport. But now you can also apply for an e-visa. But bear in mind, the process is absolutely the same. You'll have to fill the form, you'll have to download it, you'll have to print it, and you'll have to submit the application form to the VFS center in both the cases. So let's get started. So first we'll open Google or any other search engine you like, and we'll type in Japan visa. So this is the results you'll get. So this is the VFS Global website for the Japan visa. If you come down, you can see the website of Japan. And if you further come down, you'll see a website where you can see Delhi is written. Depending on your location, this might be the current city where you are residing. It might be Kolkata, Mumbai, Bengaluru, Chennai, any of that, right? And this is the website we'll be using primarily. So first we'll go just to this website first, and when we click on this website, this will open, and in this you can just click to attend a center, right? This will give you the idea at which places you can go and apply, where are the VFS centers there where you can apply the Japan visa. So first we need to open this website. You can see that is written over here, and when you click on this page will appear, right? And you can see that is again written over here. So right now if you go down, you can see you can select the visa types: tourism visa, or all the other visas, then multiple entry visas. You can also get a multiple entry visa for tourism purposes. The process is almost the same. So when you click the tourism visa, you'll see the information being shown here. You can see the overview, you can see the visa fees. The visa fees is right now 450 for Indians for both single and multiple entry. You can see the documents required, you can see the photo specifications, you can see the processing times, and you can also download the form from here. And about the processing time, it's written 5 working days. It changes from time to time, and I got my visa in about 7 days, so it's fairly accurate, right? 7 working days. And now when we go to documents required, you can see there's a list. You click on it and a PDF will appear. But wait, there's a catch. These are the documents required for the Delhi center. If you're applying from the VFS Delhi, तो आपको ये documents लगेंगे. But if you're applying from a different center, say for example Mumbai, or from Kolkata, or from Bengaluru, तो आपके जो documents required हैं उसमें कुछ differences आ सकते हैं. But ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. जो वेबसाइट मैंने खोला है, it's for the Delhi website. You just need to change the word Delhi to the corresponding center. Like यहाँ पे अगर मैं दिल्ली की जगह कोई और सेंटर का नाम लिख देता हूँ, for example if I type in Kolkata, you can see this has now changed to Kolkata. And यहाँ पे इसके options भी थोड़े different हो गए हैं, ठीक है? Same आप यहाँ पे कोई भी सेंटर लिख दीजिए. For example if I write Mumbai, तो मुंबई का यहाँ खुल जाएगा. You can see Mumbai is written over here. Now a very important thing to note is that if you don't know which center you should apply to based on your location, you can just delete the Mumbai part or any other city which is written here, and you can type in English, right? And now this page will open. Now you can see based on the state in which you reside in, you can see where to apply for, which center to apply to. Now as I am showing the Delhi process here, I'll click here, and now so the Delhi website is open again, and I'll select the tourism visa, and now I'll directly take you to the documents required. So ये requirement list है, इसका PDF खुल जाएगा, आप इसको सेव भी कर लेंगे तो बेटर रहेगा. और यहाँ पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट ये A4 साइज में आपको प्रिंट आउट सारे निकालने हैं, ऑलराइट. और ये विदाउट गारंटर वाला है. अगर कोई गारंटर है तो उसके फिर रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाते हैं, ऑलराइट. सो फर्स्ट यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट ऑब्वियसली विद 2 ब्लैंक पेजेस एंड 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए. ये जनरल नॉर्म है कि 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, नेक्स्ट 6 महीने तक आपका पासपोर्ट. एंड देन यू नीड
a photocopy of the biodata page of the current passport, that is the first and the last page, जहाँ पे आपके डिटेल्स लिखे हुए हैं, कुछ डिटेल्स सामने लिखे रहते हैं और कुछ पीछे लिखे रहते हैं, राइट. And then you need a completely filled and signed visa application form, which you'll get again from the download form option, and you'll click here. This is the form. आप इसको यहीं पे फिल कर सकते हैं. उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और यहाँ फोटो पेस्ट कर लीजिए और साइन कर लीजिए. And then again we'll go to the documents required. ना ये द फोटोग्राफ जो आपको चाहिए वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर का रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, और जो फोटो रिक्वायरमेंट्स यहाँ मेंशन्ड है एग्जैक्टली यही फोटो, इसी टाइप का फोटो बनवाइएगा. समटाइम्स दी फोटो स्टूडियो वेयर यू आर गोइंग दे माइट सजेस्ट कि ऐसा नहीं, वीज़ा में ऐसा चलता है. आप वो मत सुनिएगा, आप जैसा यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही सेम स्पेसिफिकेशंस से आप फोटोज़ निकालेंगे, और ये अलग-अलग सेंटर के अलग-अलग हो सकते हैं. Also, one more thing to note is that both the ears should be visible. So people with long hair, do note that both the ears should be visible in the photograph. Now again we'll go to the documents required, and you need a covering letter if any special explanation is needed, otherwise not required, right. और उसके बाद आपको चाहिए फ्लाइट्स के टिकट. तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम फ्लाइट टिकट करा के रखना है, आप डमी टिकट्स भी ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके, या फिर आप कैंसिलेबल टिकट्स भी ले सकते हैं. उसके बाद आपको आइटिनरी चाहिए एक जापान का. ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको ज़रूर आप इंक्लूड कीजिएगा कि आप कहाँ-कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ-कहाँ रुकने वाले हैं, एंड जिन होटल्स में रुकने वाले हैं उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि यू विल हैव टू स्टिक टू द एग्ज़ैक्ट आइटिनरी व्हाट यू हैव सबमिटेड. लाइक मैंने जो आइटिनरी सबमिट किया था उसमें मैं 4th डे में नगानो जा रहा था, बट मैं जापान में जाते ही 2nd डे में नगानो चला गया था, राइट. एंड होटल्स जो मैंने कराया था वो सब कैंसिलेबल होटल्स थे. तो मैंने अगोड़ा से कराया था, booking.com भी है और वेबसाइट्स हैं, बट मैंने अगोड़ा से कराया था. वहाँ सबसे ज़्यादा प्राइस मुझे सही मिल रही थी. सो वहाँ से कराया था कैंसिलेबल होटल से सारे फुल रिफंड के साथ. तो आप वो करा करा के, इनफैक्ट आई सजेस्ट कि आप वो करा लें ताकि प्राइस बाद में बढ़ सकते हैं. तो कैंसिलेबल होटल्स करा के, एंड यू कैन एक तो होटल्स के भी आप लिस्ट यहाँ लगा सकते हैं जो आपके बुकिंग कन्फर्मेशंस हैं, और एक आइटिनरी दिखा सकते हैं. आइटिनरी जो मैंने बनाई थी उसका लिंक मैं नीचे डाल देता हूँ, आप डाउनलोड करके उसको चेंज कर सकते हैं, राइट. एंड देन टू शो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यू नीड टू सबमिट द ITRs. यहाँ पे 3 इयर्स का ITR सबमिट करेंगे तो बेटर रहेगा. एंड इफ दैट इज नॉट अवेलेबल देन यू कैन ऑल्सो सबमिट द बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स. मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने सैलरी स्लिप्स भी इंक्लूड कर दिए थे जो उन्होंने ले भी लिया था. सो दैट माइट हैव आल्सो मेड द एप्लीकेशन मोर स्ट्रॉन्गर. तो आई सजेस्ट कि आप उसको भी इंक्लूड कर दें तो बेटर रहेगा, ठीक है. एंड यहाँ दिल्ली वाले जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें कहीं भी NOC का नहीं लिखा हुआ है कि आपको एम्प्लॉयर से NOC लेके आने की ज़रूरत है फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, राइट. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो चाहिए होता है NOC, बट किसी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. बट आई हैव सीन आई थिंक इन मुंबई और कोलकाता's document list that NOC was also required, so it differs from center to center. Now, if you're going as a student or a dependent, you need these two things. So first is the consent letter. Consent letter can also be termed as a sponsorship letter, that they are paying for the expenses and they're consenting to pay for the expenses. So I'll put a link where you can download a format and you can use that, right? And you also need the financial records of the person paying your expenses, right? So ITRs or bank statements. And then you need a proof of relationship, right? So parents के मामले में birth certificate चल जाएगा. And for husband and wife, you need a marriage certificate. The एफिडेविट जो होते हैं वो नहीं चलेंगे. यू नीड अ प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट, या फिर पासपोर्ट कॉपी में जो आपके स्पाउस का पासपोर्ट कॉपी है उसमें आपका नाम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी वाइफ का पासपोर्ट कॉपी अटैच कर रहा हूँ, इफ़ शी इज़ स्पॉन्सरिंग मी एंड आई एम अटैचिंग हर पासपोर्ट, तो उसमें एज अ स्पाउस मेरा नाम होना चाहिए. तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट. मैरिज एफिडेविट नहीं चलेगा. यू नीड अ मैरिज सर्टिफिकेट और अ पासपोर्ट कॉपी जिसमें स्पाउस का पासपोर्ट कॉपी जिसमें आपका नाम लिखा हुआ हो. ऑलराइट. एंड ये सारे VFS दिल्ली के रिक्वायरमेंट्स हैं. अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है दे विल कॉन्टैक्ट यू. एंड कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो देंगे, आप तो कॉपीज़ देंगे, प्रिंट आउट्स एंड कॉपीज़ देंगे, वो रिटर्न नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द पासपोर्ट जो आप ओरिजिनल में देने वाले हैं. So these are the requirement list. Now the last step is to take the documents and go to the VFS center. इसमें भी कुछ differences हैं, please listen carefully.
कुछ सेंटर्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ सेंटर्स के लिए ज़रूरत पड़ती है। पुट द लिंक बिलो जहाँ पे यूल सी विच सेंटर्स रिक्वायर एन अपॉइंटमेंट एंड विच डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती, यू जस्ट नीड टू गो इन देयर। बट अगेन यहाँ पे भी एक चीज़ है, जैसे कि अगर आप खुद के लिए लेके जा रहे हैं, इफ़ इट्स योर ओन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यू नीड टू बी देयर बाई 1 PM। आप गूगल में मत जाइए कि वो 4 बजे बंद होता है या 3 बजे बंद होता है। You need to be there by 1 PM to get the token. But again, if you're taking somebody else's visa application, say for example आप अपनी वाइफ के या स्पाउस या चिल्ड्रन किसी का भी साथ में लेके जा रहे हैं, so you need to be there by 12 PM आपको टोकन लेने के लिए। फिर वहाँ जाएंगे, आप टोकन लेंगे, आपका जो टोकन नंबर है वो स्क्रीन पे दिखेगा, और जिस काउंटर पे आपको जाना है यू विल जस्ट गो देयर एंड यू विल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म्स। एंड वहाँ के जो VFS, मुझे जो लेडी मिली थी, शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल। अगर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है या उनको लग रहा है कि इससे दिक्कत हो सकती है, दे विल टेल यू अबाउट इट। एंड अगर आपको भी कुछ डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क देम देन एंड देयर। तो मेरे फॉर्म में उनको लगा था कि एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, तो उन्होंने खुद बता दिया था। और फिर मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बिकॉज इसके पहले मैंने लंदन का वीज़ा अप्लाई किया था, तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। बट जापान में उतनी ज़रूरत नहीं होती, एटलीस्ट VFS दिल्ली के लिए। बट मैं सारे वो लेके चला गया था। तो वहाँ जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उसको हटा दिया। अगर आपको ये है कि नहीं वो भी लगा दे वो, तो दे विल डू दैट ऑल्सो, यू जस्ट नीड टू टेल देम। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, VFS दिल्ली सेंटर में गया था तो मैं उसका बता रहा हूँ। वहाँ पे ओनली कैश एक्सेप्टेड था, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं चल रहा था। सो जो काउंटर्स लगे हैं सबमिट करने के डॉक्यूमेंट्स, उसके पास एक और काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे आप कैश सबमिट करेंगे, वो आपको एक रिसिप्ट देंगे और वो आप जाके काउंटर में दोबारा दे सकते हैं। सो ये प्लीज़ कीप दैट इन माइंड दैट it's a cash only thing. One more thing to note is that depending on the profession you are in, some requirements might also change. For example, if you are in a government job, then you need an NOC from the government, which you need to submit. And if you are a freelancer or a business person, then you need some type of registration that you can submit. A photocopy of that registration you need to submit it. Someone who is not working right now, you need a consent letter from the person who is bearing all the expenses. For relationship proof, if it's your parents, you need a birth certificate. For spouse, you need a marriage certificate. Marriage affidavits are not taken there, you need a marriage certificate, so please note that. Or you can show a passport, your spouse's passport, in which your name is written in the spouse's column, right? And you also need to show their financials. The person who is bearing all the expenses, their financial proofs need to be submitted. You need to submit the ITRs or else 6 months bank statement, but if you have the ITRs, that is what is preferred. Now finally I'll be talking about the documents I submitted in addition to the required documents which was mentioned there. First one is the cover letter. So in Delhi VFS Center, a cover letter was not mandatory. Obviously, if you need to explain some special circumstances, you need a cover letter, but it was not mandatory. But as I had submitted a cover letter during my London visa, so I took the same cover letter, made some changes and submitted it here also. I also made a cover letter for my wife and submitted the same. And the next thing I submitted extra was the salary slips. So only ITRs are required in the VFS Delhi Center, but I had taken along my salary slips, my wife's salary slips, and they took it. They did not deny taking it. They took the salary slips, and I feel that that also strengthened my application. So if you have your salary slips, you can submit 6 months of your salary slips. So if you feel there are any other documents which might further strengthen your visa application, please take that along with you. Take a photocopy of that. If they think it's required, they'll submit it. And if they think it's not required, they'll deny taking it. For example, I had taken my travel insurance, but they did not take it. But they took my salary slips and they also took the cover letter. In case your visa is not approved due to some issues, some document issues or anything else, सो आपका जो 450 रुपीज़ का वीज़ा फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा। VFS की फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, बट जो वीज़ा के लिए आपने दिया था 450 रुपीज़, दैट विल गेट रिफंडेड एंड यू कैन गो व्हेन जब आपका पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम आएगा, यू कैन जस्ट गो एंड टेक द money back. These are all the information I had or I could think of right now. If you have any further questions, do write it in the comment below and I'll reply as soon as possible. And if you found this video helpful, do hit the subscribe button and the bell icon, because I'll be uploading further videos about my Japan trip and it will be filled with information which you might not get anywhere else. Thank you very much.